My dear students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing questions that appeared in the SNAP official mock test that was held on 4th of October. And we'll be discussing reasoning part. We've already discussed quantitative aptitude part, so if you have not watched the session, I will pin the link above. Start karte hain session ko. So there were total 25 questions. First session is before you. The first question statement is, there are two statements and we have to find out which conclusion is the appropriate. First statement is, only a few teachers are doctors. Only a few teachers or doctors. So it is this set represents teachers and this set represents doctors. So only a few are doctors. So this we know for sure, that only a few teachers are doctors. No teachers are lawyers. So teachers and lawyers ka set mein there must be a disjoint. No element will be common. So this will be set of lawyers. Okay. Clear है? अगर इस डायग्राम को कैसे बनाया है इसमें डाउट आ रहा है, you can check the session on syllogism that I've appended in the snap playlist. वहां से चेकआउट कर लेना और डिटेल में समझ लेना. Okay. So this is the structure. All lawyers are teachers. Is it possible? Definitely not, because no teachers are lawyers. So A is absolutely wrong. Some doctors are not lawyers. तो डेफिनेटली दैट इज पॉसिबल. ठीक है, या ट्रू है ये बताओ भाई. टीचर्स दैट आर डॉक्टर्स और डॉक्टर्स दैट आर टीचर्स. दिस सेक्शन इज इनसाइड द सेट ऑफ टीचर्स एंड नो टीचर इज अ लॉयर. सो दैट इज व्हाई दिस सेक्शन विल नेवर बी अ लॉयर. इजंट इट सो? सो डेफिनेटली सम डॉक्टर्स व्हिच बिलोंग टू दिस सेक्शन विल नेवर बी अ लॉयर. तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. Okay, some teachers are lawyer. Again, when no teachers are lawyers, so option C तो absolutely wrong है. And option D, some doctors are lawyers. We cannot conclude that. It is it is very much possible that no doctor is a lawyer, or some doctors may be lawyer. I mean, this is a possible case. Possible हो सकता है, but this is not a conclusion. So that is why this won't be the conclusion. Conclusion will be only option B. Okay. ठीक है. Next question. Some dancers are actors. Some dancers are actors. So this is a set of dancers, this is a set of actors. So we know that some dancers are actors and all the actors are singers. So all the actors are inside the set of singers. First conclusion, some dancers are singers. Is this correct? Since some dancers are definitely actors and all the actors are singers, so definitely the dancers that belong to this set are singers as well. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. और ऑप्शन ए करेक्ट है, फिर आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद अदर्स? इंच, आउंस, सेंटीमीटर, यार्ड. इसमें क्या बताना है? इंच, सेंटीमीटर एंड यार्ड, ऑल दीज आर यूनिट्स ऑफ लेंथ, बट आउंस इज अ यूनिट ऑफ वेट. You measure weight in ounces. Ounces or tons. So option B. ठीक है, ounces, tons, kilograms, etc. So a simple question. Next question. Ethologists, people who study animal behavior, have traditionally divided an organism's actions into two categories. People who study animal behavior have traditionally divided an organism's actions into two categories. Categories are, first category is learned behavior, that is based on experience. Second category is instinctive behavior, that is based on genotype. Some current scholars reject this distinction and they claim that all behavior is a predictable interaction of experiences and genotype. Okay, so as per the experience and genotype we can predict their interactions and all behavior is a predictable interaction. Okay, there is no need of the distinction as per the some current scholars. Question is saying, which of the following, if true, most strengthens the arguments made in the sentence above? If true, most strengthens the arguments made in the sentence above. Which argument? This argument, the last sentence wala argument, that some current scholars reject this distinction and they claim that all behavior is a predictable interaction of experience and genotype. Okay, so which one will be most appropriate? Option A is saying all organisms with identical genotype and identical experience sometimes respond differently in different situations. So if they have identical genotype and identical experience, still they respond differently in different situations, then this is not consistent. This is not supporting the argument said in
last line, because it is saying this is a predictable interaction. All behavior is a predictable interaction. So if the genotype is identical, if the experience is identical, there must be identical response in the identical situation. Isn't it so? है कि नहीं? ये तो एक समझ में आता है. और अगर सिचुएशन डिफरेंट है तो वहां पे हम क्या कह सकते हैं? रिस्पॉन्स माइट बी डिफरेंट, माइट बी आइडेंटिकल, इट विल डिपेंड. यहां से हम अपना डेफिनेटली आर्ग्यूमेंट तो स्टैंडर्ड नहीं होता है, बिकॉज डिफरेंट सिचुएशन में रिस्पॉन्स कैन बी डिफरेंट. ठीक है, दिस डज नॉट कंक्लूड एनीथिंग, नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन. Okay, so option A is not strengthening the argument for sure. Option B, all organisms with identical genotype and identical experience always respond identically in identical situation, which implies that yes, their behavior is predictable. This is showing that predictable behavior is there. If they have identical genotype and identical experience, they respond identically in identical situations. So yes, this is a strengthening the argument made. But अभी hold करते हैं, बाकी options को भी check करते हैं. Third option, option C, all organisms with similar genotype and similar experience always respond differently in identical situations. Again, if the similar genotype and similar experience, they should be responding in a similar way if the situation is identical, because if the predictable interaction is there, if the behavior is a predictable interaction, but this is showing that this is not predictable. So quite the opposite, because they are responding differently. They are responding differently. Response is not the identical, not the similar way. So C is definitely not the answer. Option D, all organisms with a different genotype and identical experience always respond identically in identical situations. So this time genotype is different, experience is identical, and they are responding identically in identical situations. But the problem is that the scholars are saying that all behavior is a mix of both, a predictable interaction of both experience as well as genotype. But if genotype different is, still they are responding identically. So this is not strengthening our argument. ठीक है, instead this might be saying something in the mix, यानी कि जो फर्स्ट पहले इनिशियल एथोलॉजिस्ट कह रहे थे कुछ कुछ वैसा भी हो सकता है, या फिर कुछ कुछ सेकंड वाला भी हो सकता है. डेफिनेटली स्ट्रेंथन तो नहीं कर रहा आर्गुमेंट को, बिकॉज स्ट्रेंथन तब करता है व्हेन द मिक्स ऑफ टू एक्सपीरियंस एज वेल एज जीनोटाइप वाज गिविंग द सेम रिजल्ट. बट यहां पे ऐसा नहीं है, डिफरेंट जीनोटाइप है, जीनोटाइप डिफरेंट है, स्टिल दे आर रिस्पॉन्डिंग आइडेंटिकली. सो दिस इज नॉट स्ट्रेंथनिंग द आर्गुमेंट. द ओनली पॉसिबल आंसर विल बी ऑप्शन बी, because option B is kind of concluding that yes, there is a predictable interaction. The behavior, all behavior is like a predictable interaction of experience and genotype. Both matter. ठीक है, and they should not be distinctly considered. Okay, ठीक है. Okay. Next question. Unlike other retail outlets where items are purchased in any number of units that customer want, इन सुपरमार्केट आइटम्स आर ग्रुप्ड इन बल्क पैकेजेस. भाई तुम शॉप पे जाओगे, एक नॉर्मल शॉप पे, तो वहां पे तुम्हें एक मैगी का पैकेट चाहिए मिल जाएगा, ठीक है, 4 नूडल के पैकेट चाहिए मिल जाएगा, जितना तुम चाहते हो. बट सुपरमार्केट में देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट यू हैव टू परचेज इन बल्क. देयर विल बी 12 पैकेट्स, 10 पैकेट्स एटसेट्रा. सो बल्क पैकेजिंग विल बी देयर एंड यू विल गेट इट दैट at cheaper rates. So this bulk buying offers savings to the customer. The option to buy at wholesale prices by buying in bulk makes supermarkets a practical choice for budget conscious customers. Which of the following assumptions supports the author's argument? What is the author's argument? Author is saying that unlike other retail outlets where items are purchased in any number of units, so that is a convenience. भाई तुम्हें रिक्वायरमेंट 5 का है, 5 आइटम्स का है, तो तुम 5 यूनिट्स वहां परचेज कर लोगे, बट सुपरमार्केट में जाकर तुम्हें 10 परचेज करने पड़ेंगे. So that is some inconvenience, that is some problem that you will be facing. तो सुपरमार्केट्स में यू हैव टू परचेज आइटम्स ग्रुप्ड इन बल्क पैकेजेस. दिस बल्क बाइंग ऑफर सेविंग्स, बट इसका एक बेनिफिट भी है, दिस इज ऑफरिंग यू सेविंग्स. एंड द ऑप्शन टू बाई एट होलसेल प्राइसेस बाय बाइंग इन बल्क मेक्स सुपरमार्केट्स अ प्रैक्टिकल चॉइस. सो ऑथर इज सपोर्टिंग सुपरमार्केट्स, showing support for supermarkets for budget conscious customers. Okay, so if author is showing support for the supermarket, so the option that is not showing support for the supermarket or not affirmative for supermarket, not supportive for supermarket, that will not be the answer. ठीक है. Additionally, assumption क्या होगा? What can be the assumption of the author behind this argument? क्या assumption हो सकता है? First thing is, for example, let us say कि तुमको 5 items purchase करने थे और तुम्हें मिले 8 items, cheaper rate में मिल रहा है वो तो ठीक है, बट तुमको चाहिए 5 items थे और 8 items मिल रहे हैं, तो तुम्हारे काम के हैं, सिर्फ और सिर्फ तभी काम के होंगे when you want to buy more if available at cheaper rate. Isn't it so? So first assumption will be that customer wants to buy more, because अगर उसको परचेज ही नहीं करना है कोई चीज ज्यादा, तो व्हाट्स द पॉइंट, कितना भी सस्ता दे दो क्या फायदा. दैट इज फर्स्ट थिंग. Isn't it so?
ठीक है, दिस इज वन अजम्पशन. ओके, ऑप्शंस पे चलते हैं. ऑप्शन कह रहा है सुपरमार्केट्स ऑफन हैव ग्रेट बाइंग पावर एंड लोअर ओवरहेड कॉस्ट सो दे कैन ऑफर अ ग्रेटर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स देन रेगुलर रिटेल आउटलेट्स. फाइन, दिस इज फाइन, बट इज इट सपोर्टिंग द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट दैट इज मेंशन्ड अबव? ये ऑथर क्या कह रहा है कि बल्क बाइंग ऑफर्स सेविंग्स and hence supermarkets are practical choice for budget conscious customers. Okay, ठीक है, so that is the argument that the author is making, but option A is telling about something different, ठीक है, which might be consistent but definitely not supporting or definitely not the assumption behind the author's argument. ये assumption नहीं है, ठीक है, कि often have great buying power, lower overhead cost, ये सब चीजें assumption नहीं है हमारा, because he is talking about कि customers के लिए beneficial है. This is not saying about that thing. Option B, it is economically wise to buy single items since bulk packages seldom offer significant savings. This is taking quite the opposite turn. Author का जो argument था उसके बिल्कुल उल्टा बोल रहा है, so ये तो बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता. Option C, the emergence of supermarkets has caused many small retail stores to close down and thus eliminate competition. Again, not supportive of supermarkets. And hence only option D remains. Option D कह रहा है financial savings from purchasing bulk packages may outweigh the inconvenience of being unable to purchase in any number of units that suits the customer's needs. So एक तरफ आया convenience of the customer. Let's say he wants to buy 5 packets. So that was the convenience. जितना उसको खरीदना था उतना वो खरीद पाता एक रिटेल आउटलेट में. But in supermarket he has to purchase 10 items. But he is getting bulk savings. So if bulk savings are not outweighing the convenience, then there is no point of the bulk savings, isn't it so? So that is why the statement is saying that bulk savings may outweigh the inconvenience. That is why the customer will be purchasing more. So option D is supporting the argument made by the author. ठीक है, that bulk buying offers savings to the customer, and that is why this may be a practical choice for budget conscious consumers. Okay, clear? Next question. A, B, C, D, F and G. Now this is a puzzle. A, B, C, D, F and G are 7 members and they are members of a sports club and have a liking for different games with carom, table tennis, badminton, bridge, hockey, football and lawn tennis. Definitely order is not the same. Each one of them has a liking for different musical instruments and there are 7 musical instruments: sitar, guitar, harmonium, flute, tabla, banjo and santoor. So एक टेबल बना लेते हैं फटाफट से. A, B, C, D, E, F and G. 7 persons. And then there are sports as well as instruments. That is the first column is for sports and second column is for instruments. ओके, तुमको तो पता ही होगा तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस वैसे लिख रहे हैं. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग दैट बी लाइक्स कैरम एंड बैंजो. फाइन, सो बी कैरम यू कैन राइट इन शॉर्ट, ठीक है, एंड बैंजो. सेकेंड स्टेटमेंट, ई लाइक्स टू प्ले ब्रिज बट नॉट हारमोनियम और तबला. सो ई लाइक्स टू प्ले ब्रिज बट नॉट हारमोनियम और तबला. नॉट हारमोनियम और तबला सारे के सारे डिफरेंट लेटर से हैं, नहीं है. ओके, बट सितार और संतूर में ध्यान रखना है, तो हारमोनियम एंड तबला. ओके, द वन हु प्लेज हॉकी प्लेज सितार. हॉकी प्लेयर प्लेज सितार, तो इसको लास्ट में लिख देंगे, हॉकी सितार, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है विच इज दैट प्लेयर. ओके, एफ प्लेज गिटार बट नॉट टेबल टेनिस और लॉन टेनिस. एफ इज प्लेइंग गिटार बट नॉट टीटी, नॉट लॉन टेनिस. Okay, A plays badminton and flute. A is badminton and plays flute. The one who plays lawn tennis does not play tabla. So lawn tennis wala does not play tabla. Okay. C plays harmonium and G plays hockey. ओके, एक सेकेंड. हाँ ठीक है, जी प्लेज हॉकी. और हॉकी वाला क्योंकि सितार ही बजाता था तो हॉकी एंड सितार आ गया साथ में. ओके, कोई स्टेटमेंट रह तो नहीं गया. द वन हू प्लेज हॉकी, एफ प्लेज गिटार बट नॉट. ओके, ए प्लेज बैडमिंटन एंड फ्लूट.
the one who plays lawn tennis. Fine. Okay, so these are the statements given. So A, B, E और G का हमने पता लगा लिया. अब क्या बचा है? C, D and F. ठीक है, F is not playing lawn tennis or table tennis, so C and D must be playing. One must be playing lawn tennis, one must be playing table tennis. और इसके बाद बचता क्या है? एक गेम बच जाता है. टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, कैरम, बैडमिंटन, ब्रिज, हॉकी, फुटबॉल. फुटबॉल इज रिमेनिंग, सो F must be playing football. ओके, ठीक है. और इंस्ट्रूमेंट्स में फ्लूट, बैंजो, हारमोनियम, गिटार, सितार हो गया है. संतूर बचा है. और क्या बचा है? संतूर बचा है और सितार हो गया है, गिटार हो गया है, हारमोनियम हो गया है, तबला. संतूर एंड तबला रिमेनिंग. ठीक है, ही इज नॉट प्लेइंग तबला नॉट हारमोनियम, सो ही मस्ट बी प्लेइंग संतूर. और फिर बच गया तबला, तबला यहां पे आ जाएगा. एंड लॉन टेनिस प्लेयर इज नॉट प्लेइंग तबला. जो तबला खेल रहा है वो तो लॉन टेनिस नहीं खेल रहा होगा, तो लॉन टेनिस आ जाएगा फॉर सी एंड टेबल टेनिस आ जाएगा फॉर डी. कंप्लीट हो गया टेबल अपना. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, हु लाइक संतूर? संतूर ही है. ई इज द आंसर, ऑप्शन डी. 7, हु लाइक्स हारमोनियम? सी. हु प्लेज फुटबॉल? फुटबॉल प्लेयर इज एफ. Which game does D play? So D is playing TT, table tennis. And last question of the puzzle, the one who likes tabla plays which game? So tabla player plays TT. एक सेकंड, डी वाले में गड़बड़ किया है क्या? अच्छा, डी ही TT भी है और तबला भी है. ओके, टेबल टेनिस. फाइन. अच्छा, जितने पजल पूछे हैं इस मॉक टेस्ट में उतने पजल्स नहीं आएंगे एग्जाम में. ठीक है, देयर वर टू मेनी पजल्स और इसकी वजह से बाकी क्वेश्चन टाइप्स को मिस ही कर दिया इन्होंने बिल्कुल, तो इतना नहीं आएगा. नेक्स्ट सेट ऑफ पजल्स, द 7 lecturers P, Q, R, S, T, U and V teach 7 subjects: physics, chemistry, biology, English, mathematics, economics and geography. And these 7 lecturers teach different subjects but not necessarily in the same order. Okay, so different subjects but not necessarily in the same order. Every teacher teaches only one day from Monday to Sunday, not necessarily in the same order. So Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Seven teachers, 7 subjects. R teaches biology on Friday. So Friday we know R teaches biology on Friday. One who teaches physics immediately on the previous day of which Q teaches mathematics. So when Q is teaching mathematics, just before that day, physics teacher is there. कौन है ये पता नहीं, but he is teaching physics just before Q. Okay. So these two will be a pair. Next, V teaches on Sunday but not chemistry or English. So Sunday V but not chemistry, not English. U teaches on the day immediately on the previous day which S teaches economics. So S is teaching eco and U is teaching on the day immediately on the previous day before that. Which subject we do not know. So U and S are also making a pair. ठीक है, U and S are also making a pair. So we've got 2 pairs basically. Okay. P teaches geography on Tuesday. P geography on Tuesday. अब 2 पेयर्स हमें मिले हुए हैं. T does not teach English. That is additional information. कहां पे फिट करोगे इन 2 पेयर्स को? बिकॉज एक स्पेस पे दिख रहा है वेडनेसडे थर्सडे वाला, बट स्टार्ट में सिर्फ मंडे दिख रहा है और फिर सैटरडे दिख रहा है और संडे दिख रहा है. क्या सैटरडे संडे में फिट हो सकते हैं? क्या कोई पेयर सैटरडे संडे में फिट हो सकता है? बट हमें हर केस में सेकंड डे पे पढ़ाने वाले टीचर का नाम इज गिवन, नेम इज गिवन. सो वी नो दैट either Q is there on the second day or S is there. So Saturday Sunday won't fit because Saturday Sunday के केस में Sunday में V is teaching, so that won't fit.
ठीक है, वेडनेसडे थर्सडे में तो एक पेयर को हम फिट कर देंगे, कौन सा आएगा पता नहीं। क्या ये क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा एक बढ़िया मजेदार चीज थी, अगर समझने में फंस अटक गए होगे तो। बेसिकली क्या है, संडे के बाद में क्या आएगा, फिर मंडे आएगा, तो संडे मंडे कैन ऑल्सो बी ए पेयर, isn't it so? संडे मंडे कैन ऑल्सो बी ए पेयर, ठीक है, सो दैट कैन ऑल्सो बी ए पॉसिबिलिटी। तो संडे के बाद मंडे आ जाएगा। अब चेक करो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज अगर संडे को वी पढ़ा रहा है, यानी कि फर्स्ट डे पे इफ वी इज टीचिंग, तो फर्स्ट डे के केस में एक पेयर में हमें नेम इज नॉट गिवन, सो दैट पेयर मस्ट फिट हियर, बिकॉज सेकंड पेयर में नेम इज गिवन, दैट इज यू। तो ये सेकंड वाला पेयर विल फिट ऑन वेडनेसडे थर्सडे, तो यू एंड एस इज टीचिंग इकोनॉमिक्स, एंड फर्स्ट पेयर विल फिट ऑन वी फॉर द फर्स्ट नेम, और सेकंड नेम हो जाएगा क्यू इज टीचिंग मैथ एंड वी इज टीचिंग फिजिक्स। ओके, सो क्यू पी यू पी क्यू आर एस टी आ जाएगा यहाँ पे, एंड सब्जेक्ट बच गए हमारे मैथ जियोग्राफी। टी इज नॉट टीचिंग इंग्लिश, सो इंग्लिश विल बी टॉट बाय यू, और एक सब्जेक्ट हमारा रह गया, वो सब्जेक्ट पढ़ाएगा कौन, टी, विच इज दैट सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री। केमिस्ट्री नहीं आया अभी तक, सो दिस विल बी अवर कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, क्लियर है? सो हु टीचेस फिजिक्स? द आंसर इज फिजिक्स इज बीइंग टॉट बाय वी, ऑप्शन डी। On which day Q teaches maths? So Q is teaching maths on Monday, option B. Who teaches English? English is being taught by you, option B. Which subject does T teach? So T is teaching chemistry, option A. And last question of the puzzle, on which day S teaches economics? S is teaching economics on Thursday. Option A is the answer. Okay. Next question. Study the following information carefully. A, B, C, D, E, and F and G are sitting in a row facing north. So they are facing north. And if they are facing north, then left will be on this side and right will be on that side. Okay. F is to the immediate right of E. E के just right में क्या है? F है. Okay, fine, because right is in this direction. E is fourth to the right of G, so if G is here, fourth to the right of G is E, and then after E there is F. This will be the structure. Okay, fourth to the right is E. C is neighbor of B and D. So if C is neighbor of B and D, that implies कि C must be in the middle of B and D. तभी तो possible है that C is the neighbor of B and D. And since there are total 7 persons and we have already have structure for 6 persons, तो अब ये तीन कहीं बाहर तो नहीं आ सकते, तो इसी के मिडिल में कहीं पे आएंगे, और मिडिल में 3 places are vacant. So definitely C will be in the middle. We do not know whether either B will be here, D will be here, or D will be here and B will be here. 2 cases are possible. The person who is third to the left of D is at one of the ends. Third to the left of D is at one of the ends. So if D is here, then third to the left of D will be a person here, but there are not 8 persons, so that is not possible. That is not possible. ठीक है? So D must be here. And if D is here, B must be here. Then third to the left of D, G is still, so G is at the end. तो सेकेंड पर्सन या लास्ट पर्सन जिसको फिट करना है, दैट विल बी हियर, दैट विल बी एट लास्ट. कौन सा पर्सन बच गया है? ए इज रिमेनिंग, ए विल बी एट दिस प्लेस. क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए? ए इज एट द एक्सट्रीम. एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ किया है क्या? एक सेकेंड. एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, फाइन. ई इज फोर्थ टू द राइट ऑफ जी, that is also fine. C is neighbor of B and D. The person who is third to the left of D is at one of the ends. तो हाँ ठीक है, third to the left of D is G. So G is at one of the ends, and then in that case A will be at the extreme end. Okay. What is the position of A? Center right. यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रहा है. Center right does not make any sense.
दिस मस्ट बी एक्सट्रीम राइट, ठीक है, एक्सट्रीम की जगह सेंटर लिख दिया होगा, माई मिस्टेक. ऑप्शन डी विल बी द आंसर, दैट ए इज एट द एक्सट्रीम राइट. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द नेबर्स ऑफ बी. सो बी के नेबर्स हो जाएंगे जी एंड सी. ऑप्शन बी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू. वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ट्रू, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस में कई बार गलती होती है, जल्दी जल्दी में हम मिस कर जाते हैं नॉट को और ट्रू वाला स्टेटमेंट मार्क कर देते हैं. तो नॉट टू आइडेंटिफाई करना है, यानी कि 3 स्टेटमेंट्स विल बी ट्रू एंड 1 विल बी फॉल्स, एंड दैट फॉल्स वन विल बी द आंसर. फर्स्ट स्टेटमेंट, ई इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी. E is to the immediate left of D. So first statement itself is incorrect, and that will be the answer, because E is to the right of D. Second कह रहा है A is at one of the ends, that is true. G is to the immediate left of B, that is also true. And last, F is second to the right of D. All of the others are true, so they are not the answer because they are true. Who are sitting to the left of C? Left of C are G and B. Option C is the answer. Next question. If A plus B means A is the mother of B, A minus B means A is the brother of B, A percent B means A is the father of B, and A cross B means A is the sister of B, which of the following shows that P is the maternal uncle of Q? P is maternal uncle of Q. और अगर स्टेटमेंट से हमें आइडेंटिफाई करना है, सो दैट इंप्लाइज दैट वी मस्ट बी गेटिंग दैट पी इज अ मेल फॉर श्योर, दैट विल बी गेटिंग फ्रॉम द कोड, इजंट इट सो? और मैटरनल अंकल है, यानी कि ही मस्ट बी ब्रदर ऑफ द मदर ऑफ क्यू, इजंट इट सो? पी मस्ट बी ब्रदर ऑफ मदर ऑफ क्यू. पॉसिबली ऐसा कोई स्ट्रक्चर होगा, ठीक है. सो मदर यानी फीमेल, ही इज अ मेल. ओके, ठीक है. अच्छा, प्लस माइनस ये जो है ये साइन मदर मेल और फीमेल के हैं, ठीक है. दीज आर नॉट द साइंस ऑफ एज पर गिवन इन द कोड. एम और एफ लिख देते हैं. क्यू कैन बी ऑफ एनी जेंडर, दैट इज नॉट अवर कंसर्न. ओके, ऑप्शन ए कह रहा है क्यू माइनस एन, और माइनस इंप्लाइज ब्रदर. क्यू इज द ब्रदर ऑफ एन, एंड एन प्लस एम, यानी कि एन इज मदर ऑफ एम, एंड एम क्रॉस पी, M cross P. So M is sister of P. Okay. बट यहां से तो उल्टा पता चल रहा है ना हमको अल्टीमेटली, बिकॉज P शुड बी द मैटरनल अंकल ऑफ Q, और ये मामला तो उल्टा आ रहा है. एक तो हमें P का जेंडर पता नहीं यहां पे, सेकेंडली यहां पे वी आर गेटिंग Q एज द काइंड ऑफ अंकल, इजंट इट सो? तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. क्लियर है? ठीक है. ऑल्सो इफ यू चेक द कोड्स, ध्यान से यहाँ पे एक बात और देख लेते हैं जो कि इस क्वेश्चन में रेलेवेंट है. हर क्वेश्चन में हमेशा जरूरी नहीं है रेलेवेंट हो, बट इफ यू ऑब्जर्व A plus B is saying A is mother of B, so we know that A is the mother, so A will be female, but B का जेंडर हमें नहीं पता. A minus B, A is the brother of B, so A will be a male brother as well as male. B का जेंडर हमें नहीं पता. A percentage B, so A is father of B, A is father of B, so that implies that A is a male, but B का जेंडर हमें नहीं पता. A cross B, A is the sister of B, यानी कि A is a female, बट बी का जेंडर हमें नहीं पता. जो भी हमारा सेकंड हाफ में आ रहा है हमारे कोड के, उसका जेंडर हमें नहीं पता है. जेंडर हमें किसका पता है? सिर्फ उसका जो कि फर्स्ट हाफ में आ रहा है. सो इफ वी हैव टू मेक श्योर दैट पी इज द मैटरनल अंकल, तो पी का जेंडर हमें पता होना चाहिए. सो पी शुड नॉट बी इन द सेकंड हाफ ऑफ द इक्वेशन, और दैट इज वाई ऑप्शन ए तो आंसर नहीं है, ऑप्शन डी भी आंसर नहीं होगा, बिकॉज यहां भी पी सेकंड हाफ में आ रहा है. तो चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर किसी और ऑप्शन में होता तो सीधे सीधे हमें आंसर मिल जाता. ठीक है, वी ओनली हैव टू चेक बी एंड सी. ऑप्शन बी, P plus S. So P is the mother of S. So option B will not be the answer, because P को तो अंकल होना है, मदर कैसे हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन सी को चेक करते हैं. P minus M, so P is the brother of M. M plus M, तो M is mother of N, and N cross Q, तो N is sister of Q. तो yes, P is maternal uncle of M. तो ऑप्शन सी is the of Q. ऑप्शन सी will be the answer. क्लियर है? छोटी छोटी सी बातें जो एडिशनल बताई हैं उनको भी ध्यान से समझना, उनको भी ध्यान से चेकआउट करना, और आगे जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो वहां पे उनको आइडेंटिफाई करोगे तो उससे ऑप्शन एलिमिनेशन में आसानी होगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. पिक अप द राइट एनालॉजी. हिरार्की, रैंक, इक्वेशन, सॉल्व्ड, क्रिटिक,
biased, chronology, sequential, infinity, fixed. तो hierarchy, what is hierarchy? Hierarchy is rank order based on certain factor. Based on certain factor. It might be ranking of positions or ranking in some other way as well. ठीक है, तो this is a rank order. So hierarchy is connected to rank in that way. It is a rank order. Equation solved does not make sense in that way. Critique biased, not connected in that way. Chronology is sequential order. Chronology is sequential order. So that will be the answer. Option C. Okay. Next, pick up the right analogy. Turmoil, confusion, they are synonymous. Similar things. Turmoil and confusion are synonymous. Caustic and sarcastic are also synonymous. They are also synonyms. Metamorphosis and transformation, they are also similar. Similar in meaning, almost synonymous. Metamorphosis is also a transformation. Assassination is also a murder, a type of murder. So they are also synonymous. And last but not the least, chaos and disorder, they are also synonymous. सारे के सारे synonyms ही हैं basically. So which will be the right analogy? Which will be similar to turmoil and confusion? Turmoil and confusion are also synonymous to chaos and disorder. So this is also similar to option D. That is why option D will be the answer. Because turmoil and confusion and chaos and disorder, they are almost synonymous in meaning. So option D will be the answer. Because बाकी सारे भी synonyms ही हैं, तो और कोई connection बैठ नहीं रहा है यहाँ पे. Okay, option D यहाँ पे आंसर हो जाएगा. Clear? Next question. 12 people are sitting in a parallel row opposite each other. In row 1, L, M, N, O, P and Q are facing the south. In row 2, A, B, C, D, E and F are facing the north, but not necessarily in the same order. ठीक है, L is sitting, बाकी कंडीशन बाद में देखते हैं. सबसे पहले, since in the first row persons are facing south, since they are facing south, their left will be on this side and right will be on this side. This is right, this is left, and persons are L, M, N, O, P, Q. Second row में persons are facing north, so their left will be on this side, right will be on this side, and persons are A, B, C, D, E, F. Okay, now let us read the statements. So first statement is saying L is sitting opposite to the one who sits second to the left of F. L is sitting opposite to the one who sits second to the left of F. So F is in the second row, or second to the left of F will be this person first, second, and इसके opposite sit करेगा L. Fine. Only two persons sit between B and F. Okay, so B और F के बीच में there are only two persons, but we do not know कि B किस direction में है. तो B might be on the left or on the right, both are possible. But next statement साफ साफ clear कर रहा है B sits to the left of F, यानी कि now we are sure that B must be here. ठीक है, B must be here, that much we know. Okay, is that clear? Draw कर देते हैं. This will be L. Fine. The number of persons sitting to the left of L is same as number of persons sitting right of P. ठीक है. N is sitting second to the right of P. N is sitting second to the right of P. And since right is on that direction, so N will be here and there will be one more person between them. Okay. Next is A sits immediately left of D. A is sitting immediately left of D. रो का ध्यान रखना है कौन सी रो में बैठ रहा है. ठीक है, सो ए क्योंकि सेकंड रो में है, दैट इज वाई लेफ्ट विल बी इन दिस साइड, एंड नन ऑफ देम इज एट द एंड ऑफ द रो. सो केसेस क्या हो सकते थे? ए एंड डी माइट हैव बीन हियर और दे माइट हैव बीन हियर, डिपेंड करता है क्योंकि अभी तो हमने पूरा ओपन रखा है अपना स्ट्रक्चर को. बट वी नो दैट ए एंड डी में से कोई भी इज नॉट सिटिंग एट द एंड, सो दे आर नॉट एट द एंड्स, इंस्टेड दे आर इन द मिडिल. दे आर फॉर श्योर इन द मिडिल एंड उनका ऑर्डर भी पता है. सो दिस मस्ट बी ए, दिस मस्ट बी डी. Next, C sits opposite to the one who sits second to the left of Q. C sits opposite to the one who sits second to the left of Q. के opposite C is sitting. Okay. ठीक है. So this is the structure that we know. O and P are not immediate neighbors. O and P won't be sitting together. This is not possible.
ठीक है, so can Q be here? Because if we place Q here, then opposite to this position must be C, but that is not possible, so Q cannot be here. इस प्लेस पे तो हो ही नहीं सकता. ठीक है, can Q be here at this position? Can Q be here? Because if Q is here, then opposite to this will be C. ठीक है, तो पॉसिबल है, Q can be here, पॉसिबल है, but we do not know. ठीक है, can Q be at a place maybe here? No, he cannot be on this direction, because अगर वो वहां पे होगा तो at opposite to this position must be C, but यहां तो L और A बैठे हुए हैं, तो Q cannot be here. Okay, so Q can be here at this position, or might be Q can be here. These are the only two possible cases. And if that is so, अगर भाई at max Q यहां पे होगा, and if Q is at that location, so we know for sure कि at least one person is sitting here. Isn't it so? कम से कम एक पर्सन जरूर होगा, and if Q is here, then there will be two persons. But we do not know for sure कि दो persons होंगे कि नहीं होंगे, but एक तो जरूर होगा. Is that clear? क्या इतना क्लियर है? Okay, ठीक है. So Q can be at either this position or this position. Then we know that N and P का स्ट्रक्चर भी हमें पता है कि N और P के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है. ठीक है, तो हमारे पास क्या केसेस बन रहे हैं, क्या केसेस हो सकते हैं? भाई either we'll have Q here, then where will be N and P? N और P कहां पे रहेंगे? This must be the case. Isn't it so? This will be 6 persons. Or in the second case, Q will be here, and then there will be 2 persons. Okay, in that case N और P कहां पे रहेंगे? This will be N, this will be P. Okay, clear? Or third possibility could be that in the second case L is here and maybe N is here, then Q, then P, then the last person. ठीक है, अब हम इंपॉर्टेंट कंडीशन जो गिवन था, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ L is same as number of persons sitting to the right of P. What does that mean? Let us say in general, ठीक है, let us say L is sitting here at second position from the left. ठीक है, so P must be sitting at the second position from the right. ठीक है, तो L का रैंकिंग जो होगा, if L का रैंकिंग is second from the left, P का रैंकिंग will be second from the right. That is what it is. That is what it means. So if L is at the second position from the left end, then P must be at the second position from the right end, which is not in first case. So this cannot happen. ठीक है, even in this case, L is at the second position from the left, but P is at the fourth position from the right. So this is also not possible. In this case, L is sitting second from the left and P is sitting second from the right. So yes, this will be our preferred structure. This will be the answer. Okay, clear है? ठीक है, so O L, O तो नहीं है ये, this is a space, and then N P Q, N Q P, N Q P, and then one space which opposite is C. So A B C D, this will be E. अब फिलअप कितने रह गए हैं? O रह गया है और एक और पर्सन रह गया है. O and P are not immediate neighbors, so O will not be here. O will be here. L M is remaining, M will be here. So this will be our complete structure. Okay. First question, what is the position of Q with respect to L? Position of Q with respect to L. So Q is second on the left. Q is second on the left. Isn't it so? ठीक है, second on the left, second to the left. Who among the following pair of persons are sitting next to each other? OC, PE, LD, MF. अब सारे के सारे जो पर्सन्स हमें गिवन है, दे आर नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, इनफैक्ट ऑपोजिट होंगे. तो गड़बड़ लिखा है यहाँ पे, ऑपोजिट मेंशन होना चाहिए था, बिकॉज दोनों सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं सब में तो ऑपोजिट डिफरेंट रो में बैठे हुए हैं. तो OC, PE, LD, MF,
OC is not opposite, PE is opposite, LD is not opposite, MF is not opposite. तो PE will be the answer. बट PE आंसर किस चीज का है? ऑपोजिट कौन बैठा है? ठीक है, नेक्स्ट टू ईच अदर तो कोई भी केस नहीं है, बिकॉज दे आर ऑन डिफरेंट रोल्स. ओके, लास्ट क्वेश्चन. ऑल चिलीज आर गार्लिक, सम गार्लिक इज अनियंस, all onions are potatoes and no potatoes garlic. All chilies are garlic, so all chilies will be inside the garlic. Some garlic is onions, so garlic or onions mein some part will be common for sure. All onions are potatoes, all onions will be inside the set of potatoes. And lastly, no potato is ginger, so this is garlic. No potato is ginger, so potato and ginger mein there will be no common element. This will be the structure. First statement, some onion is ginger. Is that possible? Yes, that is possible. But will that be the conclusion? No. In fact, no, that is not possible. Some onion cannot be ginger because पूरा का पूरा onion हमारा is inside potatoes. So no potato is ginger. That is why no onion will be ginger. So this is incorrect. Impossible. Some garlic is potatoes. Yes, that is definitely true because some garlic is onions and all onions are potatoes. So some garlics are potatoes. So option B is definitely correct. Option C, some chilies are potatoes, cannot be concluded. Possible है but conclude नहीं कर सकते. ठीक है, possible है, नहीं भी possible है, तो option C is not the answer. Option B is the answer. Okay, so that is the complete set of all the 25 reasoning questions. And you can see that there were many puzzle based questions, but actual exam में there will not be so many puzzle based questions. And also there were many sections, for example critical reasoning पे भी कुछ questions तो आए थे, but as such some questions were missing. So there will be different type of questions of reasoning in the actual exam. Definitely not so many puzzles, और सारे के सारे बाकी जो questions miss हुए हैं वो भी cover होंगे. That's all in this session. इसमें session में solution में इतना ही रखते हैं. And if you like the session, then make sure to hit the like button as well. Bye bye. Take care.